अगर डिस्चार्ज है, if it is foul smelling, a normal discharge can also be a little foul smelling, but then if you have a discharge which is majorly like a fishy odor, or if you have a discharge which changes in color. So color change जो होता है, जो discharge जो हमेशा रहता है, it's usually watery or just mild whitish. But if you have a discharge which is grayish in color or yellowish or greenish, or if you feel that वो discharge का जो consistency है, that has become thick and it looks like a curdy white, दही जैसा जो curdy white जो हम बोलते हैं, अगर वो वैसा हो गया, so if it's changing in color or consistency in that cycle, then you think that ये infective हो सकता है. I am Dr. Ash. I am a consultant gynecologist from PD Hinduja Hospital, Bombay. Today we're going to talk about something which is very commonly seen in OPDs, जो OPD में बार-बार दिखता रहता है, and that is one of the most irritating complaints जो एक औरत को महसूस होता है, and probably जो ज़्यादा express नहीं कर पाते औरतें. So one of the topics for today that I'll be telling you about is vaginal discharge. So initially, when you think about vaginal discharge, एक चीज है जो मैं पेशेंट को I always keep on telling is vaginal discharge can be normal, and most of the time they are actually normal. So when you go through your entire period cycle, you have bleeding during your periods, so that's menses. After that, you have a drier spell followed by a slightly watery discharge, which happens in the day of your ovulation. That happens in that time, the discharge becomes a little sticky. So you have a little sticky discharge, which happens like this. And after that, the discharge becomes thicker because your lining increases, and that is what leads to a thicker discharge. And eventually, if there's no pregnancy, the discharge also will subside and you land up with, again, a period in the next cycle. So when you understand this, जब ये समझ में आ गया कि discharge पूरे month में भी vary हो सकता है, and then you follow this, I guess जब ये introspect करोगे, when you go back and think, most of the discharge behave like this, so that's normal. But when you think about when can my discharge be something which is infective or which is of different origin, so then you think about a few other things जो मैं patient को पूछता हूँ. तो अगर discharge है, if it is foul smelling, a normal discharge can also be a little foul smelling, but then if you have a discharge which is majorly like a fishy odor, or if you have a discharge which changes in color. So color change जो होता है, जो discharge जो हमेशा रहता है, it's usually watery or just mild whitish. But if you have a discharge which is grayish in color or yellowish or greenish, or if you feel that वो discharge का जो consistency है, that has become thick and it looks like a curdy white, दही जैसा जो curdy white जो हम बोलते हैं, अगर वो वैसा हो गया. So if it's changing in color or consistency in that cycle, then you think that ये infective हो सकता है. The curdy thing is mostly because of fungus. So fungal infections are usually whitish, curdy discharge. Bacterial infection most of the times might not have major discharges. They might present with some other things like itching हो गया या rashes हो गया और fertility issues हो गया. तो उसमें भी bacterial infections are known to lead to pregnancy में difficulty cause करने के लिए. But otherwise, bacterial infections can be greenish in color, which is the most common, which is called bacterial vaginosis. Or you might have yellowish color or grayish color with discharges, which can be there. Apart from that, discharge can be associated with itching or rashes हो सकते हैं, या कभी कभार boils हो सकता है. Again, itching and rashes indicate majorly fungal infection, but again, it can be vaginal. तो ये सारी एस्पेक्ट जब हम प्लेस करते हैं, व्हेन यू ऐड 1+1, अगर डिस्चार्ज में कर्डी वाइट है जिसके साथ इचिंग है, तो आई थिंक ऑफ फंगल. अगर डिस्चार्ज में कुछ फाउल स्मेलिंग ज्यादा हो गया, विच इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ग्रीनिश कलर का हो गया, या इचिंग बहुत ज्यादा, या कोई स्वेलिंग अराउंड द वजाइना हो गया, स्वेलिंग अराउंड द वल्वा हो गया, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करता है. तब इनको ट्रीट करना पड़ सकता है. The other kind of discharge that I usually come across is अगर spotting हो रहा है, तो that is also a discharge. You have a brownish discharge. So this can be because of a lot of reasons. Commonest is it might be because of an underlying cervical pathology, the cervical malignancies that we think of. तो इसके लिए तो pap smear test आती है जो वो करनी रहती है, उससे रूल आउट हो जाएगा. कभी कभार सर्विक्स या यूट्रस के माउथ के अराउंड में एक पॉलिप हो सकता है जो पीरियड के दौरान बीच बीच में भी स्पॉटिंग कर सकता है, ब्लीडिंग कर सकता है. तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर डिस्चार्ज स्पॉटिंग के साथ हो रहा है तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ सम सर्वाइकल पैथोलॉजी,
सर्विक्स मतलब यूट्रस कम आउट, तो वहां पे कुछ पैथोलॉजी हो सकता है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग या अल्सरेशन हो रहा है या स्पॉटिंग होते रहता है। तो दीज आर मेजरली हाउ द डिस्चार्ज इज प्रेजेंट विद। तो अगर मेरे पास कोई आता है तो आई जस्ट क्लासिफाई कि अगर डिस्चार्ज है, नॉर्मल है, जो साइकिल्स के अराउंड वेरी हो रहा है, तो दिस इज हाउ यू नो। अगर डिस्चार्ज के साथ इचिंग है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है या तो कलर चेंज हो गया तो उसके हिसाब से भी मैनेज इट आउट, या डिस्चार्ज सेक्स के टाइम ज्यादा हो रहा है, स्पॉटिंग और समथिंग, देन यू थिंक अबाउट। सो अगर इतना आपने जान लिया कि ऐसे डिस्चार्जेस हो रहा है, तो आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा विल ऑल्सो बी स्पेसिफिक, एंड उसका जो इफेक्टिवनेस रहेगा, जो एक्ट करेगा, दैट ऑल्सो इज फास्टर। सो वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, अगर आप बात करने लगोगे विद दिस स्पेसिफिक थिंग्स कि मेरे को ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा है, एंड टॉक टू योर डॉक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डॉक्टर पूछते हैं तो हमको पता चलता है, मतलब मैं अगर पूछूं तो ही मुझे पता चलता है कि अच्छा डिस्चार्ज है, वरना कोई बताता नहीं है। तो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज ये रह रहे के फिर बढ़ जाएगा या अदर कॉम्प्लिकेशंस करेगा। तो इससे अच्छा इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू टॉक अबाउट इट, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू नीड, और बात करने से भी सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए इफ यू जस्ट हाइड इट, इट वोंट बी पॉसिबल। सो टॉक अबाउट इट, एंड वी आर हियर, हम यहाँ पे है, अगर कुछ भी लगता है मेडिकेशन वाइज या कुछ और लगेगा तो वी आर हियर टू गाइड यू। एनीवे, सो आज के लिए आई गेस दैट वुड बी इनफ डिस्चार्जेस के लिए। वेरी बेसिक, वेरी कॉमन कंप्लेन, एंड वेरी इजी टू मैनेज, जस्ट दैट यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव अबाउट इट। थैंक यू।